अज़ीज़ान, ladies and gentlemen, welcome to Soldier Speaks. मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ Soldier Speaks के ऊपर. Today I've got Theo-A-Mullis with me और Soldier Speaks में बहुत regularly आते हैं Theo. और Theo जो है वो जर्नलिस्ट हैं, लंदन बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और लंदन से ही हम आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. वेलकम फ्रॉम लंदन. हाल ही में जो मक्का डिफेंस डील हुई है या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसको मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है और जिसमें एक आर्टिकल 5 क्लॉज भी डाली गई है, और जो शुरू में कहा जा रहा था कि ये शिया वर्सेस सुन्नी एक जो है वो अलायंस अमेरिका ने क्रिएट किया है ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन हाल ही में पिछले चंद दिनों में ईरान हैज़ बिन ऑफर्ड, ईरान को ऑफ़र किया गया है कि वो आए और ज्वाइन करे मक्का डिफेंस डील को. और लग तो ये रहा है कि दे हैव रिफ्यूज़ड, ईरान ने इनकार कर दिया है. लेकिन फील्ड मार्शल पाकिस्तान का आसिम मुनीर गया हुआ था, वहाँ पे तेहरान गया हुआ था. बड़ी ही अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें भी वहाँ से आई हैं. दे वर डिस्कसिंग सम प्लान्स एज़ यू कैन सी इन द पिक्चर्स. And these pictures have been released by the Iranian press TV, which is official Iranian जो उनका मीडिया है, उसने ये तस्वीरें रिलीज़ की हैं. There are reports from Tehran that ईरान इसके ऊपर खुश नहीं है और कह रहा है कि हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे. लेकिन असल में क्या पीछे जो इस वक्त बातचीत चल रही है वो चल रही है कि कौन है इस सारे मामले के पीछे, कौन चला रहा है, हु इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिटवीन अ डिफेंस डील ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़. मुसलमान मुल्कों की डिफेंस डील का ड्राइविंग फोर्स कौन है, हु इज़ ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान एज़ वेल. और कहा जा रहा है कि जी कतर विल जॉइन इन, UAE may or may not join in, Kuwait and Bahrain will join in. Of course they are scared, वो डरे हुए हैं कि जी इन पर हम सऊदी अरब के साथ मिल जाएं तो ईरान हमें मिसाइल मारेगा. ईरान कैन हिट देम एट एनी टाइम इफ़ दे डोंट लाइक what they are doing. But obviously the $1 million question ये है, the $1 million question is कि is China the driving force behind this latest maneuvering? And इतना आसान किस तरह है पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए अमेरिका को धोखा देना? How come it is allegedly so easy for the Pakistani military establishment to make fools out of Washington DC? And that is the question I'll put to Theo-A-Mullis. और मैं थियो से यही सवाल पूछने लगा हूँ कि यार क्या पाकिस्तानी धोखा दे रहे हैं अमेरिकियों को, हमेशा की तरह डबल गेम कर रहे हैं, या जो है वो कोई और कहानी है इसके पीछे? और मैं आपको तर्जुमा भी करूँगा. सो थियो, this Makkah defense deal going forward, and they are pitching it forward as a Muslim NATO, and initially everybody was saying that it's a Sunni versus Shia divide in the Muslim world, and the Americans are backing it. But now Iran is being offered to join in. So obviously there is a certain larger force at play over here and a grand design at play over here. And people are pointing fingers towards the Chinese, towards Beijing, that they are behind this, so-called defense agreement. So what is your read of the situation? Well, it's certainly a possibility, because no alliance that includes Turkey and Saudi Arabia can include Iran, and vice versa. They're not friends, they're not going to be in an alliance together. Going even beyond the Shia-Sunni divide, the geopolitical tensions between these countries are just too significant for there to be any lasting working military agreement. So there are a number of possibilities. Why did Munir offer it to Iran? I think we can't overlook the domestic realities in Pakistan, and that Munir maybe wants to sell this to the Pakistani people as not being internecine, as not being Shia versus Sunni, in offering this olive branch to the Iranians in the fair knowledge that the Iranians are likely to turn it down. But there is also the Chinese question, right? The Chinese wouldn't want a strong US-backed military alliance in the Middle East to counteract the power of Iran, which is one of their regional partners. And it's a possibility that they have
put a lot of pressure on the Pakistanis to see this through, because the Pakistanis, they do a lot of deals with the Chinese. Chinese have a lot of business in Pakistan, and as we saw in the recent fighting between Pakistan and India, Chinese technology did very, very well in that conflict. So certainly a question there. But I think given that the Chinese are generally very careful, and given that they are less interested in spreading autocracy and completely undermining sort of the US-led global order immediately and rapidly in the same way that the Russians are, they would like to create alternative systems. They like to show themselves as being responsible, as being trustworthy, as being people you can do business with, you can do a negotiation, you can do a treaty with, and it's not going to be torn up in the next week or in the next administration. And you mentioned the Pakistanis making fools out of the current incumbents in Washington, DC, and I do have to add that that's a very low bar. They make fools out of themselves with every Truth Social post. So, but that certainly plays into China's longer term games. That's not saying that the Chinese necessarily have it all their way, though. So I think that there are a lot of questions to us, and it does seem a bizarre move, because although the Pakistanis have been very involved in US and Iran negotiations and trying to paint themselves as peacemakers and middlemen, this doesn't seem like doing that. This seems like breaking up an alliance which could offer a balance of power in the region. If I'll give a summary of a bottom summary of what you've just said, जो थियो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल चाइना पीछे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को असला भी प्रोवाइड करता है और चाइना पाकिस्तान के अंदर उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे लग ये रहा है कि आसिम मुनीर जो है वो, क्योंकि ज़ाहिरी बात है शिया सुन्नी एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो सकता है, तो उसको पता था, उसने ईरान को ऑफ़र इजाज़त लेके कर दी। एक what थियो कह रहे हैं कि एक ये है कि ईरान को उसने ऑफ़र की कि आ जाओ, और उसको पता था कि ईरान इनकार ही करेगा, इसलिए ईरान को ऑफ़र की ताकि जो है वो शिया सुन्नी इशू ना खड़ा हो सके। और ज़ाहिरी बात है आसिम मुनीर की जो एफिलिएशंस हैं पुरानी वो तो हमको पता ही हैं। एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ ज़ाहिरी बात है कि वाशिंगटन DC के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उसमें सदर ट्रंप की ट्रूथ सोशल की पोस्ट के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह वो अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प्स conduct is immature, to say the least. Is that true? Yeah, diagnosably so. तो वो कहते हैं कि जी जिस तरह सदर ट्रंप की जो पॉलिसी है वो बड़ा आसान है बीजिंग के लिए कि अपना असर रसूख वो बढ़ा सकता है, और बीजिंग का इन तमाम मुल्कों के ऊपर जो है असर रसूख मौजूद है, और बीजिंग इंतहाई मोहतात तरीके के साथ किसी को भी है किसी से नई लड़ाई लड़े बगैर जो है वो अपने मफादात को आगे बढ़ा सकता है इस अलायंस के ज़रिए। और ये कहना कि सो इज़ बीजिंग रियली द सेंट्रल फोर्स बिहाइंड दिस सो कॉल्ड मुस्लिम NATO? I not behind them. I think that the people driving that, are sitting in Saudi and Turkey and to an extent the United States. Although I would bear in mind to the audience that the United States is A, getting a bloody nose in the Middle East at the moment, and B, engaged in sort of a return to pre-World War II isolationism. Now we'll see whether that lasts post this November and then the next presidential elections, or whether this is an isolationist sort of bump on the road. But I think it's really too early to say exactly that the Chinese have been involved, or exactly that it's trying to sell this to a Pakistani domestic audience and reduce sort of inter-religious tensions there. But I do think the question of Afghanistan needs to come into this in a certain regard, because Pakistan is having a lot of conflict with Afghanistan, conflict with the Taliban in a fit of geopolitical irony. And perhaps the Iranians may be in a position to offer some assistance, perhaps not. Perhaps this is a continuation of that. ये जो थियो बात कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जल्दी तो कहना ये बहुत मुश्किल होगा कि चाइना ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि फोर्स तो पीछे सऊदी अरब में लोग बैठे हुए हैं, पैसा भी उनके पास है, वो अपना लगा रहे हैं।
लेकिन अमेरिका जो इस वक्त जिस तरफ जा रहा है वो दूसरी जंग अजीम से पहले जो उनकी पॉलिसी थी कि वो अपने आप के अंदर रहते थे, उस तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। और एक लफ्ज़ उन्होंने ब्लडी नोज़ का इस्तेमाल किया कि जो मशरक़ वस्ता में ईरान के साथ जो जंग हुई है उसमें अमेरिका को जो है वो ठीक ठाक फेंटी पड़ी है, ये वो कहना चाह रहे हैं। हमारी ज़ुबान में ब्लडी नोज़ की ट्रांसलेशन यही बनती है, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ज़ाहिरी बात है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सवाल ये मैं पूछता हूँ। और सवाल जो बार बार आ रहा है कि इस ईरान वॉर के साथ ये तो बड़ी लंबी चढ़नी है, इसके बाद दुनिया जो है वो क्या दोबारा बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आप जा रहे हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हो? अमेरिका की जो इस वक्त यूनिपोलर स्टेटस है उसका क्या बनेगा ईरान जंग के बाद? सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर आफ्टर ईरान वॉर ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर? Oh, I think the unipolar world order is done. And it's not an accurate analogy to say that we're moving into a new Cold War. Once you look at it, the lines in the old Cold War are a lot more, strongly defined. But it is accurate to say that we are now in a period of increased great power competition, certainly between the Chinese and the United States. The Russians, of course, they don't have the economic power of either of these countries. They don't really have the military power of either of these countries. However, they act so recklessly that they are a significant force to be dealt with as well. So certainly, the unipolar world order, post Cold War, that's absolutely done. And that has to be brought into consideration. But a lot of things depend on what happens in DC, what happens in Beijing, what happens in Islamabad and Moscow and Brussels. तो थियो जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त अमेरिका की हुक्मरानी थी पूरी दुनिया के ऊपर वो तो ख़त्म हो चुकी है। अब अमेरिका की सिर्फ अकेली हुक्मरानी नहीं है, लेकिन ये कहना कि रशिया भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने आप को जो है वो एक ग्लोबल ग्रेट पावर राइवलरी में एक अपनी अलग शनाख्त बना सके। और चाइना बहरहाल उभर के सामने आ रहा है। पर सवाल फिर ये है कि आगे चल के क्या एक नेचुरल अलायंस जो है वो चाइना और रूस का बन सकता है? अफ़गानिस्तान की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के बहुत से मसले हैं, अफ़गानिस्तान से भी इन्होंने खाम खा का पंगा लिया हुआ है। और उसके अलावा पाकिस्तान के अपने अंदर अगर शिया सुन्नी का मसला खड़ा हो जाता है फसाद का, तो बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसीलिए ईरान को ये ऑफ़र किया गया है ठंडा करने के लिए कि ईरान जाके अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल न करे, ज़ाहिरी बात है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या एक जो आगे दुनिया आपको नज़र आ रही है उसमें एक ऑटोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसमें चाइना मॉडल आप बोलते हो, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान का तो ये बनाना चाह रहे हैं। क्या ऑटोक्रेसी जो है वो चाइनीज़ डोमेन के अंदर और रशियन डोमेन के अंदर या रशिया चाइना अलायंस के अंदर ऑटोक्रेसी ही जो है वो परवान चढ़ेगी, या डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है उस खित्ते में जहाँ पे हम रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर के ऊपर? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का क्या फ्यूचर है? ये दो बहुत अहम तरीन इशू हैं। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड हाउ डू यू थिंक द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू, स्पेशली इन एशिया and Asia Pacific, is going to play out for autocracies or hybrid regimes like Pakistan and democracies like India? What is their future? So certainly, and I left it off my earlier list of capitals, India is going to be incredibly significant in the coming 50 years. It's the world's largest democracy, although its democracy, much like if you want to look at a parallel, I guess Hungary and Orban. So under Modi, India's democracy has suffered and it has become sort of less democratic. But again, democracy is not a switch, it's a sliding scale. Now, the future of democracies is very much dependent on whether democracies, and autocracies for that matter, are able to leverage themselves into this new competition effectively or not. And I would argue that the democracies are currently better positioned, and especially China isn't aimed at really spreading autocracy. It's aimed at protecting primarily its own regime and then other autocratic regimes. तो वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप को नहीं सपोर्ट करता, डेमोक्रेसीज़ के साथ भी, जमहूरियत के साथ भी चलता है। चाइना ने कारोबार करना है, जिस तरह जो भी सिस्टम चल रहा है वो उसके साथ चलता है। लेकिन इंडिया अगले 50 साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी इस वक्त है, लेकिन जो मेरा अगला सवाल है वो कह रहे हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है
और मोदी सरकार है, मोदी जी के होते हुए जो है वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इतनी परफेक्ट नहीं है। और मेरा अगला सवाल ये है कि मोदी जी के होते हुए इंडिया ने जो फाइनेंशियल तरक्की की है वो क्या डेमोक्रेसी की वजह से नहीं की? सो डोंट यू थिंक दैट द मोदी गवर्नमेंट which is being blamed for, you know, suppressing or the freedoms of expression maybe, and you know, related freedoms, have performed tremendously well as far as the Indian economy and is concerned, and as far as for the benefit of the Indian, not only Indian economy, for the Indian people. They have the present government of Modi have really worked out for the Indian people. Don't you think so? Yeah, but I would offer a warning. So did Vladimir Putin's government in Russia in the early 2000s. It's a very, very dangerous deal to make, to trade your freedom, to trade your right to political expression for economic growth and for wealth. But can you honestly compare Putin with Modi? No, not today. Putin, not today, all right. No. Maybe in future? It's a warning, you're saying? It's a warning. All right. तो कह रहे नहीं अभी तो ठीक है, मोदी जो काम कर रहा है वो इंडियंस का फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा आगे चल के, लेकिन हो सकता है पुतिन की तरह वाला काम हो जाए, लेकिन हो सकता है कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। वापस आते हैं जो मक्का डिफेंस डील या इस्लामिक नेटो है, इसके अंदर ज़ाहिरी बात है इसको अगर देखा जाए तो इसमें क्लॉज 5 है और क्लॉज 5 नेटो की भी मौजूद है। उस तरह की क्लॉज 5 है कि एक मुल्क के ऊपर अगर अटैक होगा, तुर्की के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान भी जाएगा, सऊदीया भी जाएगा, सऊदीया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान भी जाएगा, तुर्की भी जाएगा। लेकिन हमें ग्राउंड पे नज़र ये आता है कि इस वक्त तक सिर्फ असला बेचने के लिए जो है वो तुर्की, सऊदीया पैसा इस्तेमाल कर रहा है और मैन पावर भेजने के लिए मर्सनरी माइंडसेट के तहत पाकिस्तान की आर्मी जा रही है। क्लॉज 5 क्या वाकई एक्टिवेट हो सकती है इस एग्रीमेंट में, सो कॉल्ड मुस्लिम नेटो के अंदर? सो डू यू रियली बिलीव दैट सो फार द एग्रीमेंट वर्क्स एज सच दैट द पाकिस्तानीज आर प्रोवाइडिंग मैन पावर एज मर्सनरीज टू द Saudi Arabia? The Pakistani army is being deployed over there to defend Saudi Arab, and then at the same time the Turkish technology especially is being sold to Saudi Arab because Saudis have got the money to buy the Turkish technology. So that is the current arrangement. But there is a sort of a clause 5 in there in which if one country is attacked, the second will come to the defense. Do you think it is a practical clause? Do you really think that if India attacks Pakistan, Saudis will come to their defense? No. And the reasons for that are, although there is a common faith, I don't think there is a lot of commonality between Saudi Arabia, between Turkey and between Pakistan, and certainly not with Iran. Okay. In the same way that there is certainly commonality between Lithuania, Latvia and Estonia in NATO. These for an Article 5 to work, it has to be sold to everyone, to the entire populace. And it has to be something that is written in stone. And that's certainly being brought into question with NATO's Article 5 and Donald Trump's actions. But you can see when it doesn't happen, as with Armenia and Azerbaijan in the CSTO, Azerbaijan attacks, Armenia requests for assistance and they get nothing. Because it wasn't worth the paper it was written on. And you will not really know until it is tested. And I think if it is implemented, it's going to take a couple of decades of integration of command and control systems, the building of a headquarters, military exchanges, everybody visiting each other's offices, academies, that sort of thing, joint exercises together to really institute that culture that we work together. Like, with NATO, it has a headquarters. Officers go on secondment to other militaries. They train together. They do exercises together. And that means that senior officers, everyone's in each other's phones and they're all calling each other by first names and going to each other's weddings. Yeah, fair point. So Theo कह रहे हैं कि यार इस तरह थोड़ी NATO बन जाती है, सेंट्रल हेडक्वार्टर होना होता है, जॉइंट ट्रेनिंग्स होती हैं, एकेडमीज़ एक दूसरे के साथ जो है वो आर्मीज़ एक दूसरे के साथ जो है वो रहती हैं, यहाँ पे पाकिस्तानियों को यल्ला प्रोग्राम चल रहा होता है। इस तरह तो नहीं होता, ये तो 20 साल लग जाएंगे। अगर वाकई क्लॉज 5 इस तरह की कोई बनती भी है तो बराबरी की सतह के ऊपर ये काम होता है। और यहाँ बराबरी की तो कोई जो है वो पार्टनरशिप सिरे से है ही नहीं कि बराबरी हो तो फिर तो कोई बात है आगे, लेकिन बराबरी का तो चक्कर यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे मैं आखिरी सवाल थियो से पूछूंगा कि जिस तरह चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है और
ईरान अमेरिका से लड़ रहा है और ज़ाहिरी बात है कि उसको सपोर्ट पीछे से चाइना की है तो लड़ पा रहा है, तो फ्यूचर डिज़ाइन फिर क्या नज़र आता है चाइना का एशिया पैसिफिक के अंदर, और उसको काउंटर करने के लिए यूरोप, अमेरिका या नेटो क्या कर सकता है या क्या करेगा? सो Theo, obviously the Iranians have been able to give the bloody nose, which you were earlier saying, to the US because of the Chinese support, because the Chinese are providing logistic support in exchange for Iranian oil. So obviously the system is working for them, and the Chinese are transporting the logistics, and that is why the Iranians are able to fight back still, and they're still, standing up. And the Iranian regime have not collapsed, although they're facing a lot of financial troubles. There are sanctions, significant problems for the Iranian peoples are there. But having said that, they're still fighting. And they're able to fight because of the Chinese support. So under the circumstances, what is the future of the region as a whole in the context of great power rivalry? It shall continue. It shall continue. It shall continue. Yeah. But Trump's want to go back. He doesn't want to start new wars. He thought the war in Iran would be a short, sharp thing. He did what he did in Venezuela, and he thought it would be the same thing, right? So he got what's the phrase? High on his own supply, and it hasn't worked out that way. No. He underestimated the resolve of the Iranian military. I'm no friend of the Iranian regime. I'd like to see it go away and be replaced with something that doesn't, fund Hezbollah, etc. And drug deals around the world. Their munitions depth, everything that they'd built beforehand, and a lack of understanding of how 21st century warfare has changed. Yeah. So a 30,000 USD Iranian drone can shut down the Strait of Hormuz. And the Americans could keep it open if they had enough frigates, which they don't. Instead, they're building Trump-class battleships instead of frigates, which they desperately need. But they would have to accept that they'd lose one or two in doing it. That's true. So they could do it, but they cannot accept the losses because Trump billed himself as the peace president who would have no new wars. And he cannot have, it would be the end of his presidency if he had images beamed all over the world of an American ship going down in the same way as, say, the Moskva. Yeah, makes sense, makes a lot of sense, because वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता. एक तो अमेरिका जो जंग लड़ रहा है वो अभी तक जो है ना वो हैंगओवर उसका पुराना चल रहा है. जो जंगें हुआ करती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक, वेनेजुएला के चक्कर में ईरान चले गए, उल्टा पड़ गया सारे का सारा काम यहाँ पे. और ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त जो जंगें हैं वो ईरान किस तरह अपने 20-30 हज़ार डॉलर के ड्रोन के साथ इनकी जो है वो मिलियंस ऑफ जो है वो डॉलर्स के इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ाया करवा रहा है. इंटरसेप्टर इतने कम हो गए हैं कि अभी यूक्रेन में देने के लिए भी इनको नहीं बचे हुए हैं. ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. थियो जो है वो यूक्रेन का स्पेशलिस्ट है और वहाँ पे जाके इज़ अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट एज वेल, और वहाँ पे जाके जो है ये करता है. एक मैं इसको छेड़ने के लिए सवाल जाते जाते कर रहा हूँ कि यूक्रेन में इंडिया और पाकिस्तान के जो है प्रिजनर्स ऑफ वॉर बैठे हुए हैं जो कि रशिया के लिए जाके पैसे लेके लड़े थे. सो जस्ट ऑफ द टॉपिक, बट देयर आर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज प्रिजनर ऑफ वॉर इन यूक्रेन. So what are they doing over there? I'm going to be investigating it. All right. But it is recorded that Indian and Pakistani students and young men went to Russia under the pretenses of going to university or under pretenses of work, and then by whatever means they have signed military contracts. And they have ended up in Ukraine fighting on the side of the Russians. And I believe it's likely that some will have been captured. All right. And I want to see what their routes to get to Ukraine were. I want to answer the questions, did they understand what they were signing? Okay. Did they feel any pressure? Because there have been a number of stories, and you may have seen a number of videos circulating online of people from all over the world fighting for the Russians, fighting on the Russian side, and then some later, if they've managed to get home or been captured, they have said that they did not understand what they were signing, that they felt pressured,
and that they felt they were actually trafficked into this conflict. Yeah. So it's certainly a question I think people would be interested in finding the answers to. सो थियो जा रहे हैं यूक्रेन ख़ास तौर के ऊपर, अगले महीने इसकी ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं शहरी जो कि रशिया के लिए लड़ रहे थे, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि उनको धोखा दे के, नौकरी का झांसा दे के वहाँ पे बुलाया गया, बताया गया कि वो कुछ और करेंगे, करवाया कुछ और जा रहा है। इस तरह के बहुत से केसेस हैं। बांग्लादेश वाले भी इसके अंदर शामिल हैं। नौकरी की तलाश के अंदर वो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से और बांग्लादेश से बाहर गए और उनको वहाँ पे लड़ने के लिए जो है वो आगे जंग की भट्टी के अंदर झोंक दिया गया और अभी वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन के वहाँ पे बैठे हुए हैं और थियो को एक्सक्लूसिव एक्सेस वहाँ पे मिली है, जाएंगे और वहाँ से हमारे लिए लाजमी जो है वो स्टोरी भी हम उनके साथ करेंगे और लिखेंगे भी ज़रूर। थैंक यू सो वेरी मच थियो-A-Mullis फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू।